Good morning, children. Welcome to e-learning class. Children, we are going to start our third chapter today, that is subtraction. Okay, our third chapter is subtraction. Now, children, you have already learned about subtraction in your previous class. So, today we will know some more things about it. So, let's see what is subtraction. Children, you can see here one question is written here, or we can say one sum is written here. So we have to subtract it. So this we have used for example. Now what is this? If we have 48 pens and given it 38 pens to our friends, अगर हमारे पास 48 पेन्स हैं और हमने उसमें से 38 पेन्स अपने फ्रेंड्स को दे दिया, सो हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट विद अस? सो वी विल माइनस इट. लेफ्ट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? लेफ्ट का मतलब होता है बचा हुआ. सो बचा हुआ मीन्स हम कब निकाल पाएंगे बचा हुआ? व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर, सो वी कैन टेक आउट द लेफ्ट नंबर. So you can see here 48 minus 38 is 8, or 8 minus it will be 0. 4 minus 3 it will be 1. So 10 pens are left with us. Thus the difference between 48 and 38 is 10. Okay, now we will learn terms used in subtraction. What are the terms? We will use the same question here also for knowing the terms of subtraction. So children, you can see 48, 38 and the answer is 10. So this 48 this is minuend, 38 is subtrahend and 10 is difference. अब हम इन तीनों टर्म्स को थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ेंगे. Now we can see we have written the definition also. First is minuend. The number from which the number is subtracted is called the minuend. Means जिस नंबर से किसी नंबर से जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 48 से 38 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड किससे कर रहे हैं? 48 से कर रहे हैं. देन दिस 48 इज minuend. Now second is subtrahend. The number which is being subtracted is called subtrahend. The number which is going to subtract, जैसे here 48 is subtracting 38, so this 38 is going to subtract from 48, so this 38 is subtrahend. Now third term is difference. The result obtained after subtraction is called difference. Means the answer which comes after subtracting the minuend and subtrahend, that is difference. जो आंसर लास्ट में आता है वो होता है difference. Okay, now remember, before going to the question or before going to start our subtraction, we remember some terms which we used only in subtraction. First is taken away. सेकेंड इज लेफ्ट, जैसा कि लेफ्ट हमने ऊपर ही पढ़ा था. लेफ्ट, रिमेन्ड, बचा हुआ. डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस. गिवन अवे, दे दिया. हाउ मैनी मोर देन, अब कितने और हैं. हाउ मैनी मोर आर नीडेड, और कितने चाहिए. सो इस टाइप के टर्म्स कभी भी अगर यूज होते हैं तो वी नो दैट दीज आर द टर्म्स यूज इन सब्ट्रैक्शन. Okay, so once again you will see taken away, left, remained, difference, given away, how many more than, how many more are needed. These are the terms used in subtraction. Clear? Now we will see some facts we are using in subtraction. So subtraction facts. First is, unlike addition, the order of the number is important
इन सब्ट्रैक्शन। जो नंबर का ऑर्डर होता है, जैसे कि ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने एडिशन में पढ़ी थी, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। मीन्स कि क्वेश्चन जिस भी ऑर्डर में दिया है वो ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। वी विल नॉट चेंज द ऑर्डर इन सब्ट्रैक्शन एज वी आर चेंजिंग इन एडिशन, but we will not change the order in subtraction. You can see here, say for example 5 subtracted from 10 means 10 minus 5. अगर 5 10 में से subtract किया जा रहा है then it means 10 minus 5 is equal to 5. We cannot write it as 5 minus 10. Okay, we will not change the order of the numbers. अगर 10 पहले है तो 10 पहले ही लिखेंगे एंड 5 बाद में है तो 5 बाद में ही लिखेंगे. We will not change the order. Clear? Second fact is, when we subtract 1 from number, we get the predecessor of that number as the difference. अगर हम किसी नंबर से 1 को subtract कर रहे हैं तो we will get the predecessor of the minuend. For example, you can see 5000, we have written 5000 minus 1. So we will borrow from 5. So 5 will give 1 to 0, then it will give here 1, it will give here. So it will become 0 will become 10. 10 minus 1 is 9. Again अगर इसने 1 दे दिया तो ये 9 बचा. 9 will be 9. Again here 9 है तो 9 will be 9 और 5 क्योंकि उसने एक नंबर बाकियों को दे दिया, so it will become 4 now and we will write here 4. So children, you can see 4999 is the predecessor of 5000. 5000 का predecessor 4999 होता है. Now next fact is, third fact, when we subtract 0 from a number, we get the number itself as difference. अगर हम किसी नंबर से 0 को subtract करते हैं तो जो नंबर है वो सेम ही आंसर होगा. For example 5239, when we will minus 0 from it, so what will go? Nothing will go from this number, so this will be the difference. This will be same answer. 5239 same as minuend. Last and fourth fact is, when we subtract a number from itself, the difference is always 0. That is 2365 minus 2365 will be 0 as answer. अगर हम एक जैसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों नंबर हमारे सेम होते हैं, मीन्स minuend and subtrahend will be same, so the answer will be 0. Okay children, now your homework is learn this fact, understand this chapter which I have explained here, and if you will have any query then you can ask me in next class. Thank you and have a nice day.